इस तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमारा एम है टू डिटरमाइन द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज एंड पैरेलल लॉज यूजिंग अ मीटर ब्रिज। हमें पता है अगर दो रेजिस्टेंसेस हम सीरीज में रखें तो उनका जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर होगा, वो हम सीरीज लॉ यूज करते हैं। एंड जब उन्हीं दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में रखें तो वी यूज दी पैरेलल का लॉ जो है। जब रेजिस्टेंसेस कंबाइन करते हैं पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें इस लॉ से मिलती है। सीरीज में हमें पता है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो होती है सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस दैट आर इन सीरीज। एंड पैरेलल का जो लॉ है उसमें उसके मुताबिक हमें जो रेजिस्टेंस मिलती है पैरेलल में, रेसिप्रोकल ऑफ दैट रेजिस्टेंस is equal to the sum of the reciprocals of the resistances that are combined in parallel. तो मीटर ब्रिज वही हम यूज करेंगे जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने किया था। तो we'll be placing on the left side we'll be placing a resistance box, on the right side we'll be placing an unknown resistance, okay? And then फिर हम बैलेंसिंग लेंथ वैसे ही निकालेंगे। सपोज ये नल पॉइंट है तो बैलेंसिंग लेंथ L होगी यहाँ से, और यहाँ से टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर्स है तो टोटल लेंथ होगी 100, दिस लेंथ वुड बी 100 माइनस L। बाय द वे दिस इज अ रेजिस्टेंस लेबल्ड S, दिस इज अ रेजिस्टेंस लेबल्ड Q। अब हमें पता है बैलेंस, जब हम दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो दिस रिजल्ट रिलेशन होल्ड्स R इज इक्वल टू P टाइम्स S in S divided by Q, okay? Actually, you could also see it like P into S is equal to R into Q. So, ये relation आ गई, but S is proportional to length, and that is 100 minus L, and Q is proportional to length, that is L. So, हमें R निकलेगी इस formula से, resistance जो हम यहाँ पे जोड़ेंगे। Actually, करेंगे क्या हम दो wires लेंगे, एक wire का हम label रखेंगे R1. So, this would be the resistance of wire 1. एंड ऐसे ही दूसरी वायर लेंगे, उसकी रेजिस्टेंस का लेबल हम नाम रखेंगे उसका रेजिस्टेंस R2, ओके? दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 2। अच्छा, जब हम सीरीज में इनको कंबाइन करेंगे इन दो रेजिस्टेंसेस को R1 एंड R2, तो जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगी एक्सपेरिमेंटली वो हम RS से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन सीरीज, ओके? जब हम लॉ अप्लाई करेंगे डायरेक्टली, अगर हमें पता है R1, हमें पता है R2, वी कुड यूज डायरेक्टली ये वाला लॉ। तो लॉ से जो रेजिस्टेंस सीरीज में मिलेगी वी विल कॉल दैट दिस इज अ थियोरेटिकल वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस यूजिंग सीरीज लॉ, ओके? ऐसे ही हम R1 और R2 को पैरेलल में रख सकते हैं, और पैरेलल में प्रैक्टिकली हम देखेंगे कहाँ पे पैरेलल में रखेंगे, यहाँ पे R जहां पे है ना, यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस हम पैरेलल में रखेंगे, एंड वी विल फाइंड प्रैक्टिकली व्हाट इज द रेजिस्टेंस वैल्यू RP। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर R1 एंड RP कनेक्टेड इन पैरेलल। बट वी कुड ऑल्सो यूज द पैरेलल लॉ, रेसिप्रोकल का लॉ, जो हमें पता है दो के वक्त हम लिखते हैं सिंपली पैरेलल में। अगर दो रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आपकी पैरेलल में है तो उस वक्त हम लिखते हैं सिंपली प्रोडक्ट ऑफ टू रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय सम, व्हिच इज एक्चुअली वही रेसिप्रोकल वाला जो लॉ है पैरेलल का। तो दिस RP प्राइम या RP डैश विल रिप्रेजेंट अ वैल्यू ऑफ द पैरेलल रेजिस्टेंसेस यूजिंग पैरेलल लॉ ऑफ रेजिस्टेंसेस, ओके? तो ऑब्जर्वेशन हम टेबल बनाएंगे, दिस इज ऑल, यहीं पे सारा हम देखेंगे व्हाट विल हैपन हियर, एंड वी विल वेरीफाई लेटर ऑन इसी टेबल से the laws. Of course, we'll calculate errors in each measurement. तो यहाँ पे पहले हम R1 लेबल रखेंगे, यहाँ पे R1 वायर रखेंगे इस जगह पे, and then we'll find इसके 3 वैल्यूज by changing the resistance box का वैल्यू P, जैसे हमने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में किया था, and then we'll find the balancing length, we'll substitute here, and then find out the mean, in तीनों readings का mean निकाल के, and then of course we'll calculate the experimental error. Similarly, यहाँ पे भी हम ऐसे ही R2 इस जगह पे R2 रखेंगे, and then R2 का 3 वैल्यूज निकालेंगे, corresponding 3 वैल्यूज कैलकुलेट करके we'll calculate the error. And then what we will do actually is we will connect those R1 and R2 wires in series here. And then calculate this series resistance here,
एंड ऑल्सो इन्हीं जगहों पे पैरेलल में रखेंगे पैरेलल रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज. फिर हम चेक करेंगे वेदर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज वेरीफाई द लॉज इन सीरीज एंड वेरीफाई द लॉज इन पैरेलल. तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है. तो लेट अस सी द अरेंजमेंट. So this is the power supply that I'm using. I'll be giving some voltage here to this meter bridge. Now you can check यहाँ पे I'm using a positive voltage and this positive connection here. This is a positive wire. This is connected to this end, and the negative end of the voltage supply power supply is connected to this end. So it's like this. ये प्लस इस एंड को और माइनस इस एंड को. ऑफ कोर्स देयर इज अ स्विच जो मैंने इसी में रखा हुआ है. अगेन देन वी विल यूज बी लेफ्ट गैप पे जो यहाँ पे है मीटर ब्रिज में, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स चूज करेंगे. देयर इज अ गल्वानोमीटर एंड अ जॉकी कनेक्टेड हियर. आपको पता है जनरल कनेक्शंस क्या होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इसमें. एंड जो हम अननोन रेजिस्टेंस रखेंगे जिसका हमें निकालना है, से दिस वायर हेयर इज आवर वायर 1. इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच करके रखा हुआ है. सो probably इट्स विजिबल यहाँ पे वीडियो में. तो विल बी यूजिंग दिस वायर. लेट अस कॉल दिस R1. इसकी पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे वही जैसे सेकेंड एक्सपेरिमेंट में किया था. ठीक है. एंड फिर देन विल टेक अनदर वायर एंड वो हम यहीं पे जोड़ देंगे एंड देन फाइंड आउट उसकी रेजिस्टेंस. एंड देन फिर उन दोनों वायर्स को सीरीज में एंड पैरेलल में आप देखोगे आगे कैसे करेंगे हम. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले लेट अस अप्लाई सम वोल्टेज. तो आई हैव अप्लाइड सम वोल्टेज टू दिस ब्रिज यहाँ पे. नाउ दिस इज ऑन एंड आई हैव टेकन आउट यहाँ पे मैंने 2 ohms निकाला हुआ है. सो आई विल प्लेस यहाँ पे पहली रीडिंग कर रहे हैं हम R1 वायर के लिए. मैंने P का वैल्यू 2 ohms निकाला हुआ है. एंड लेट अस सी द बैलेंसिंग लेंथ इसके लिए. सो आई विल टेक अ जॉकी, आई विल स्लाइड ओवर दिस वायर एंड चेक आउट द बैलेंसिंग लेंथ. Now you can see where it balances, where it shows null deflection. Okay. So I think this is the null deflection point. Let us check it properly. ये हमारा null deflection point है. So what does it say? 40.5. Okay, we'll take out this read. तो 40.5 second reading के लिए we'll change this value. Let us say we'll take out now 3 ohms के लिए हम check करेंगे. 3 ohms निकाला है. 1 + 2 is 3. 3 ohms का value है यहाँ पे. We'll register यहाँ पे 3 ohms and let us see where is the balancing length इस वाले केस के लिए. So I have put this jockey and this यहाँ पे आप देखो. So I am moving it, sliding it over इसके ऊपर, and I see the balancing length takes क्या measurement आ रही है. So this is 50.5. Okay, 50.5. I think जो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा दैट इज क्लोजर टू 3 ohms बिकॉज ये सेंटर में आ गया. ओके, लेट अस टेक अनदर नाउ रीडिंग. हम लेंगे अब 4 ohms के लिए. अब चेक कीजिए. 2 + 2 is 4 हमने निकाला हुआ है. 4 ohms हमने लेफ्ट कैप में रखा. एंड देन लेट अस सी व्हाट हैपेंस. वेयर डू वी गेट द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट. ओके, सो आई एम स्लाइडिंग इट हेयर. अब देखो आई हैव क्रॉस्ड बियॉन्ड 50 विच इज एक्सपेक्टेड यहाँ पे. सो आई एम गेटिंग अ null deflection somewhere here. Okay, this is the null deflection point. And if you check, this is 58. Okay, 58 on this, 58 centimeters. So for 4 ohms, I'm getting 58 centimeters. So let me calculate now. The R value, यानी कि इसका क्या वैल्यू है, and then I'll calculate the mean. So I have calculated here now. When I substituted here and फिर round off करके I got resistance value 2.9, 2.9, 2.9. I calculated the mean 2.9 ही आ गया यहाँ पे mean इसका.
So this is our resistance R1, okay, 2.9 value, but we have to calculate error in measuring this. So I use the formula in calculating the resistance error is the mean value that we obtained times the error in measuring P, which I have taken as half the smallest division, that is 0.5 ohms, divided by, I take this value because this is closer to 50. हमें पता है सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी के एतबार से हमें जो सेंटर में जितना क्लोज आएगा सेंटर की तरफ अगर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आएगा दैट इज मोर एक्यूरेट. सो विल टेक दिस वैल्यू 3 हियर एंड इस वैल्यू के लिए हम चेंज इन लेंथ देखेंगे. चेंज इन लेंथ इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन मिलीमीटर है, उसका हाफ लिया 0.5 एंड डिवाइडेड बाय this value, the length 50.5 times 2, we calculated that, round off karke to 0.5. So our R1 value is 2.9 ohms plus or minus 0.5 ohms. Okay, ye hum copy karenge onto this table later. First we'll take another wire and find out its value. Okay, now we will find out the resistance of R2. ये जो है second wire 2, इसके लिए हम रेजिस्टेंस निकालेंगे. ये थोड़ी लंबी है, अगर आप देखोगे ऐसे मैंने स्ट्रेच करके रखी हुई है यहाँ पे, तो वी आर एक्सपेक्टिंग इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी दैन R1. ओके, और R1 की ऑलरेडी रेजिस्टेंस निकाली हमने 2.9 प्लस और माइनस 0.5 ohms. So let us see what is the resistance value R2. So first we'll take out यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने निकाली है 4 ohms. तो फर्स्ट we'll start with 4 ohms. R2 के लिए 4 ohms के लिए कैलकुलेशन करेंगे. लेट अस स्विच ऑन द डिवाइस. हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई की. लेट अस सी नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे अप्लाई होगी. सो यू कैन चेक यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन हैपन्स at this point. Okay, just a minute. This is the null deflection. This is the null deflection point, and you can see the value is 49 centimeters. Okay, so this happens at 49 centimeters. Now we'll calculate for 5 ohms. तो हम 5 ohms के लिए calculate करेंगे null deflection. You can see this is, मैंने यहाँ पे 5 ohms निकाला हुआ है. Okay, 5 ohms के लिए null deflection check करेंगे इसी वायर के लिए R2 के लिए. So you're getting null deflection here. If you see, this is 55.5 centimeters. So null deflection for 5 ohms is 55.5 centimeters. Now let us change the value to 6 ohms. तो 6 ohms के लिए calculate करेंगे. null deflection कहाँ पे आएगी? 55 से ज़्यादा ही होगा. कहाँ पे होगा null deflection? This place, and this is 60.5. This is 6 ohms के लिए we are getting 60.5 centimeters. Let us do now calculations. So wire 2 के लिए ये substitute करने पे इस formula में we get 4.2 ohms, and for this resistance P value ये अगर होगा तो 4 ohms and 6 के लिए ये ohm. And when we find out the mean, this is 4 ohms. We also calculated the error in measuring this R, that comes around 0.4 ohms के करीब. So the error जो है, that is, sorry, the resistance value is 3.9 plus or minus 0.4 ohms. Okay, so now we will connect these two wires in series में हम इनको connect करेंगे R1 और R2 और देखेंगे experimental values क्या है. Of course we'll calculate later on theoretical values भी क्या है. So let us do now RS. Okay, third set of reading के लिए हमने इन दो वायर्स को, आप देखिए ये एक वायर है और ये दूसरी वायर है, इनको इकट्ठे जोड़ रखा है. यहाँ पे हमने जोड़ किया इनको पैरेलल सीरीज में जोड़ दिया. ठीक है,
So one wire is connected to the other wire in series. और इस गैप में हमने इसको जोड़ के रखा हुआ है और यहाँ पे हम अब वैल्यू लेंगे रेजिस्टेंस हमने P का वैल्यू अब मान लो स्टार्ट करेंगे सपोज 6 ओम से. लेट अस सी, या 6 से बेहतर रहेगा 7 ओम से. we'll start calculating 7 ओम से. what is the value for null deflection point? ओके तो हम पहले RS में सीरीज में पहले 7 ओम्स निकाला हुआ है. लेट अस सी नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगी हमें. सो वी आर गेटिंग अ नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे. यहाँ पे. So yeah. And this is you can see this is 48 centimeters. So null deflection we're getting at 48 centimeters. Now we'll take out 8 ohms. So 8 के लिए एक और निकालेंगे. This is 5, 6, 7 and 8. 8 ohms के लिए हम देखेंगे null deflection कहाँ पे मिलेगी हमें. So null deflection, if you see, it is 51.5 centimeters. So for 8 ohms, we're getting 51.5 centimeters. Now we'll calculate for 9 ohms. अब 9 ohms से बेहतर रहेगा 10 ohms. Why? Because हमें एक ही निकालना है ये, तो एरर हमारा कम होगा. So हमने 10 ohms निकाला हुआ है यहाँ पे. 10 ohms के लिए कैलकुलेट करेंगे नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगी. वी आर एक्सपेक्टिंग वे बियॉन्ड 55. ठीक है. सो लेट अस सी नल डिफ्लेक्शन. ओके, इफ यू सी नल डिफ्लेक्शन इज एट 58.5 centimeters. So this is 58.5 centimeters. Okay, let us do the calculation. Okay, तो इन तीनों के लिए मैंने कैलकुलेशन की. इसके लिए हमें 7.6 ohms निकला, 7.5 ohms and 7.1 round off करके, and then we calculated the mean 7.4 ohms. We calculated the error in measuring RS, that is about 0.5 ohms. Okay, now let us find out RP इसी तरीके से. आरपी निकालने के लिए मैंने इन दो वायर्स को, वायर 1 एंड वायर 2 को पैरेलल में रखा. यू कैन सी वन वायर हेयर, यहाँ से दिस इज वन वायर, अनदर वायर इज इन पैरेलल. ऑफ कोर्स इट हैज नॉट टू टच दिस. ये यहाँ से ऐसे यहाँ पे पैरेलल में है. इस ऐसे मैंने इसको यहाँ से इससे स्ट्रेच करके रखा हुआ है. Okay, these are two wires connected in parallel. They are not connected in here. There is no a sort of इनके बीच में connection नहीं आ रहा है. तो बट ऐसे parallel में है. Okay, let us calculate. इसके लिए अब हम यहाँ पे resistance box में we'll start with say 2 ohms. We'll start 2 ohms. हम P का value start करेंगे. तो RP calculate करने के लिए 2 ohms का start करेंगे value. Let us see. The null deflection point कहाँ पे होगा. So I'm getting a null deflection at, I think because we are getting 60 के beyond, let's start with 1 ohms, not 2 ohms. 1 ohms से start करेंगे. Smaller से बड़े की तरफ हम जाएंगे. Say 1 ohms के लिए हमें calculation, 1 ohms के लिए null deflection हमें मिली at this point, and if you see this is 37 centimeters. So I had started not from 2 ohms, 1 ohms के लिए 37 centimeters. Let me now do for 2 ohms के लिए null deflection. अब length increase हो जाएगी.
So null deflection at 2 ohms के लिए हमें मिली So null deflection is at 55. Okay. So 2 ohms के लिए we are getting null deflection at 55 centimeters. Now let us go for 3 ohms and see null deflection कहाँ पे जाएगी. So null deflection is 63.5 centimeters. So for 3 ohms, it is 63.5 centimeters. Let me do the calculation now. Calculation के मुताबिक 1 ohms के लिए 37 centimeters, 2 ohms के लिए ये calculate करके हमें मिला 1.7 ohms, 1.6 ohms, 1.7 ohms. Average निकाला तो 1.7 ohms. फिर हमने error calculate किया, that's about 0.3 ohms. And so therefore हमारी जो resistance in parallel की reading है जब हम दो wires को parallel में that's 1.7 plus or minus 0.3 ohms. So now let us copy this table onto the board and then do other calculations. Okay, let's see that now resistances जो हमें मिली R1 का value जो हमें मिला R1 का value हमें मिला equal to that is 2.9 plus or minus 0.5 ohms. R2 का value हमें मिला 4.0 plus or minus 0.4 ohms. And RS का value सीरीज में जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं practically तो हमें मिला 7.4 plus or minus 0.5 ohms. एंड RP का वैल्यू जब हम इन दोनों वायर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं प्रैक्टिकली सो वी आर गेटिंग 1.7 प्लस और माइनस 0.3 ohms. ओके सो लेट अस सी व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 वुड बी दिस वुड बी 2.9 प्लस और माइनस 0.5 ohms प्लस ये R1 का वैल्यू है, R2 का वैल्यू इज दैट इज R2 का वैल्यू निकला 4.0 प्लस और माइनस 0.4 ohms. So let us calculate the sum. So 2.9 plus 4 is 6.9. 6.9 plus or minus the error is 0.9 ohms. Now this is the value obtained from the law, series law. Series law के value मुताबिक value आ रहा है 6.9 plus or minus 0.9 ohms. Okay, so this value lies between 6 and 7.8. 6 and 7.8 के बीच में ये lie कर रहा value. और जो practically हमने calculate किया, now see here, practically what are we getting? We are getting a value of RS of 7.4 plus or minus 0.5. That means we are getting 7.1 or 7.8, 7.9 के बीच में value. 7.1 to 7.9, sorry, 6.9 to 7.9 तक 7.9 तक हमें वैल्यू मिल रहा है. एंड आप देखो दिस लाइज इन दिस वैल्यू. ओके तो सिंस ये जो है ना RS प्राइम लाइज विद इन एक्सपेरिमेंटल एरर within experimental error in RS lies within experimental error. Therefore, of value RS, therefore series law
is verified. Okay, this is how we verify series law. Now let us calculate the the theoretical value of Rp prime, R1 into R2 divided. We'll substitute these two values and also error में हम देखेंगे क्या आ जाएगा value. तो substitute करने पे हमें मिला 1.7 R1 and R2. R1 का value is 2.9 and R2 का product divided by sum, and we'll get approximately 1.7. And there is an error जब हमने इसमें calculate किया, so that error is 0.3 ohms. Now see, we are getting almost, in fact we are getting the exact value जो हमें, so there is not much error, कुछ भी नहीं है. तो जो हम expect कर रहे हैं value, practically that is the value. Theoretically, that is the value we are obtaining experimentally. So we could write, so since Rp prime lies within experimental error of value Rp, so therefore parallel law is verified. Okay, so हमने सीरीज लॉ भी वेरीफाई किया और पैरेलल लॉ भी वेरीफाई किया आज कोठी बाग में, ठीक है, on October 20th, 2020.